Welcome to all the students of Sri Sid Vidya Paid School. Today we are going to study the Chapter 10 of Science of Class 7 Respiration in Organisms. So in this chapter we are basically going to understood that how an organism takes breathe and inhale and फर्स्ट क्वेश्चन अराइज दैट व्हाई डू वी रेस्पायर. हम क्यों रिस्पिरेशन का जो ये प्रोसेस है हम क्यों रिस्पायर करते हैं. सो द आंसर इज ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स विच इज नोन एज cells. So these cells have different functions to perform in these organisms such as digestion, respiration, transportation and excretion. So the cells can perform this function only if they get energy to do so. Hence, all living organisms need food which gives them the required energy. The energy present in the food gets released when the organism respire or breathe. How food helps us in gaining energy? So, as we breathe, we take in the air that contains oxygen in it and breathe out air which contains carbon dioxide. These oxygen when transported in our cells helps in breaking down food and we get energy. तो कैसे फूड हम लोगों को हेल्प करता है एनर्जी गेन करने में. जैसे ही हम ब्रीथ करते हैं वैसे ही हम एयर इनहेल करते हैं जिसमें ऑक्सीजन रहता है और जब हम ब्रीथ आउट करते हैं जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रहता है. तो ये जो ऑक्सीजन है ये हमारे सेल्स में ट्रांसपोर्ट होते हैं और कोई भी फूड को ब्रेक डाउन होके उसमें से एनर्जी लेने में हम लोगों को हेल्प करते हैं. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सेलुलर रेस्पिरेशन. सो सेलुलर रेस्पिरेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस in which the food that we eat is broken down inside the cells, which results in the release of energy. All the cells in living organisms undergo the oxygen that an organism breathes in reacts with the carbohydrates present in the food and results in the release of carbon dioxide, water and energy. तो सेलुलर रेस्पिरेशन को हम लोग डिफ़ाइन कर सकते हैं जिस जहाँ प्रोसेस में जहाँ पे हम कोई भी खाना खाते हैं वो खुद ब खुद ब्रोकन डाउन होता है हमारे सेल्स में और वहाँ से हम लोगों को एनर्जी मिलती है. सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन का ये प्रोसेस है ये होता है. और कहाँ पे होता है, कौन सा सेल ऑर्गेनल में, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. जो ऑक्सीजन है ऑर्गेनिजम्स जो ब्रीथ करते हैं और ग्लूकोज मतलब यानी कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है प्रेजेंट होता है वो किस में रिजल्ट्स करता है, वो जो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं वाटर और एनर्जी उसी में वो हेल्प करता है. सो द रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, हियर इज द केमिकल फॉर्मूला. Now there are two types of respiration. The first one is anaerobic respiration and the second one is anaerobic respiration. So what do you mean by aerobic respiration? Which takes place in the presence of oxygen, and anaerobic respiration which takes place in the absence of oxygen. So aerobic respiration leads to release of a high amount of energy in living organisms, whereas anaerobic respiration results in a low amount of energy. Human beings and many other animals undergo aerobic respiration, and carbon dioxide and water are also released in aerobic respiration, whereas yeast and sometimes human beings undergo anaerobic respiration. Anaerobic respiration. So students, here you can see the chemical formula of aerobic and anaerobic respiration. Now what do you mean by anaerobes? Organisms that can exist in the absence of air are called anaerobes. तो जो organisms air के absence में exist कर सकते हैं, for example yeast
are known as anaerobes because they are unicellular organisms, and they exist in the absence of oxygen as well. As a byproduct, they release ethanol and carbon dioxide. That is why they are used to make wine and beer, which is also known as alcohol fermentation. Now, how anaerobic respiration takes place in human beings? So sometimes muscles of human beings can respire without oxygen. कभी कभी हमारे जो human beings के जो muscles है वो without oxygen भी वो respire कर सकते हैं. और ये क्यों होता है? By doing heavy exercises for a long duration. So उस situation में muscle को बहुत energy की ज़रूरत पड़ती है, और जहाँ पे सब वो ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो ज़्यादा वहाँ पे हो नहीं पाता है. तो इसी हिसाब से वहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होता है. तो यही लैक्टिक एसिड जो है एक्यूमुलेट होता है मसल्स में, और क्रैम्प्स जो होते हैं वो उसी लिए हमारे बॉडी में वो क्रैम्प्स होता है. और दैट इज़ वाई वी ऑफन फील क्रैम्प्स व्हेन वी डू while we doing heavy exercises. And in order to get relief from those cramps, we can take a hot water bath or massage our muscles. This is so because hot water bath or massage improves the blood circulation of the muscles. All right. Now, breathing. Breathing can be defined as a process in which organisms, with the help of respiratory organs, takes in oxygen and release carbon dioxide. Inhalation means you have to, in the process which you are taking air, contains oxygen inside the body. Exhalation is opposite of inhalation, in which you are releasing air from your body, contains carbon dioxide. All right. Breathing rate can be defined as the number of times a person breathes in a minute. The breathing rate is always constant in a human beings. All right. And this is so because body needs more oxygen, which can break down the food and produce more energy. जनरली एक एवरेज ह्यूमन बीइंग जो है वो कब कितना ब्रीथ करते हैं? 15 to 18 टाइम्स इन अ मिनट. मिनट में 15 to 18 टाइम्स वो सांस लेते हैं. ओके. So here you can see the picture of the breathing and cellular respiration occurs in the human lungs. All right. There is a question that why do we feel hungry? Why do we feel hungry after doing a physical फिजिकल एक्टिविटी के वजह से वो जो एनर्जी होता है वो कन्वर्ट होते रहता है एनर्जी में. उसी लिए जो जितने भी फूड्स हम कंज्यूम किए हुए रहते हैं वो जो जनरेट करते हैं, एनर्जी जनरेट करते हैं, और हम लोग हंग्री फील करना स्टार्ट कर देते हैं. इन ऑर्डर टू गेन मोर एनर्जी एंड वी हैव टू नीड टू टेक मोर फूड. So the respiratory systems in humans is like we take in air present in environment through our nostrils, which travels through the nasal cavity. Then it moves through the windpipe and reaches the lungs. The lungs are located in the chest cavity, which is surrounded by the ribs. On the floor of the chest cavity lays a muscle seat, which is known as diaphragm. During the breath process, the movement of the ribs and diaphragm takes place. This is so because the lungs expand and contract during breathing. Okay. So this is the whole process of the respiratory systems of humans. Like there is a question that why do we sneeze? हम लोगों को छींक क्यों आती है? Because जब भी हम लोग कोई एयर जो है वो इनहेल करते हैं, कुछ अनवांटेड एलिमेंट्स हम लोग के इनहेलेशन के साथ चला जाता है, और जब वो नोस्ट्रिल्स में स्टक हो जाता है तो हमें इचिंग फील होने लगती है, इरिटेशन होता है. तभी हम लोगों को जो एक स्नीज है वो आता है और जो अनवांटेड पार्टिकल है वो निकल जाता है. अगेन देयर इज़ अ क्वेश्चन दैट व्हाई डू वी ब्रीद आउट? हम लोग क्यों सांस छोड़ते हैं? बिकॉज ऑक्सीजन कंटेंस जो होता है वो 20% होता है, एक्सेल्ड है 16%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%,
उसमें लेस वाटर वेपर कंटेन होता है और एक्सेल्ड एयर में मोर वाटर वेपर कंटेन होता है. ब्रीदिंग इन अदर ऑर्गेनिजम्स का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है, लाइक हाउ अ कॉकरोच ब्रीद. सो मैनी इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोचेस हैव स्मॉल ओपनिंग्स कॉल्ड स्पिरेकल्स प्रेजेंट ऑन द साइड ऑफ द बॉडीज. तो जो भी कोई कुछ बहुत सारे इंसेक्ट्स में, जैसे लाइक कॉकरोचेस में, उनके साइड में एक स्पेशल ओपनिंग रहता है, स्मॉल ओपनिंग्स रहता है जिसको स्पिरेकल के नाम से जाना जाता है. वो ही उनको, उसमें कुछ एयर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिनको कहा जाता है ट्रैकिया. वही अलाउ करता है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी इनहेल एंड एक्सेल करने में उनको वही हेल्प करता है. तो जब एयर एंटर करता है बॉडी पे थ्रू एनी स्पिरेकल्स, देन इट डिफ्यूजेस इन द सेल्स वाया ट्रैकिया. Similarly, the air from the cells enters the trachea and moves out of the body through the spiracle. How an earthworm breathes? So earthworm have a small slimy and moisty skin, so hence the gases can easily pass in and out of the earthworm through its skin. तो earthworm कैसे सांस लेता है, वो उसके skins के मदद से. How an underwater animal or reptile can breathe? So animals live underwater, have special respiratory organs which is called as gills. They are a comb-like structure present on the skin of these small animals. एक comb like structure वहाँ पे present रहता है. जो gills है वो ही exchange of gases करने में उनकी help करते हैं, inhale and exhale करने में. Now the oxide and releases oxygen for us. So they are always opposite like human beings. Okay. So for which process they generally respire? For the process of photosynthesis, which helps to produce food. Okay. So as a result, the oxygen is out of oxygen and through the absorption of carbon dioxide. All the parts of the plants can independently respire, that is, they can take in the carbon dioxide and release oxygen in their own. The leaves of the plants have stomata present upon them, which are small pores like structures. This allows gases to exchange in the leaves. The woody stems of the plants can also respire. This is because of the presence of special tissues called lenticles. The cells of these tissues have large intercellular spaces. They exist as dead cells or woody plants and roots and allow the exchange of gases. The bark of trees, although, is impermeable to gases, and hence these tissues serve an important purpose of respiration in the stems. The roots of plants have hair-like structure on them and hence they can absorb air present in the soil. Now why plants die if overwatered? क्यों हम लोग अगर ज़्यादा water दे दें पानी में तो वो मर जाते हैं plants? As we know that the roots get oxygen from the soil. So जो soil present होता है उसमें जो soil particles होता है उसमें कुछ moisture content भी होता है. तो जैसे ही हम उसको ज़्यादा पानी दे देते हैं तो जो सॉइल पार्टिकल्स है वो क्लॉग्ड हो जाते हैं, यानी एक दूसरे में बंद हो जाते हैं. तो उसी के रिजल्ट से रीजन why roots can absorb air from the soil. Now the chapter has ended. Move on to the exercise question. Question number 1, 2, 3, 4. I will provide you answers. Do the question number 5, 6, 7, 8 by your own in your homework. If you face any doubt in this chapter and in your homework, you can ask me. I am going to clear your all doubts. So let's do the remaining question. The first question is, why does an athlete breathe faster and deeper than usual after finishing the race? During the run, the demand of energy is high, but the supply of oxygen to produce energy is limited. Therefore, anaerobic respiration takes place in the muscle cells to fulfill the demands of energy. After finishing the race, athletes breathe faster and deeper than usual so that more oxygen is supplied to the cells. Okay.
The second question is list the similarities and difference between aerobic and aerobic respiration. So if you will read the answers, I hope you will get to understand it. Question number 3 is why do we often sneeze when we inhale a lot of dust laden air? So we have also read this. I have also explained to you. I hope you understand if you read the answer. Question number 4 is you have to take a test tube here and you have to fill them with water, label them as A, B, C, then keep a snail in test tube A and water plant in test tube B and C. Keep snail and plant both. Which test tube could have higher concentration of oxygen? So test tube A will have higher concentration of oxygen because snail will take in oxygen and gives out carbon dioxide. But in B and C, carbon dioxide utilized by the water plant for synthesizing food, and hence there will be less concentration of carbon dioxide in this. So by this the chapter 10 is ended. Write all the notes and question answers in your fair copy. Learn it by heart. And if you all face any doubt in this chapter, you can ask me. I am going to clear your all doubts. Read the chapter carefully to understand properly. Thank you, students.